हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ समस्त को। तो पुणी थर आपण स्वागत करुच्ची ओडिया एग्जाम गुरु एकेडमी को। तो पुणी गोटे साइंस पेडागोजी पेपर 2 गोटे वीडियो आपण पाखक मु नहीं आसी। तो ये वीडियो रे आपण साइंस पेडागोजी ओटीईटी पेपर 2 2025 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट सिलेबस कवर ए वीडियो भितर आपण माने पाइबे। तो वीडियो को देखंतु एंड क्वेश्चन डिस्कशन जो एक्सप्लेनेशन आपन को मु जेहेतु देइनी तो वीडियो को शेष पर्यंत देखिए एंड टेलीग्राम चैनल जॉइन करिवे। हमर टेलीग्राम चैनल रो लिंक आपण मानकु मु डिस्क्रिप्शन दे देइछि। डिस्क्रिप्शन में जाकि आपण टेलीग्राम चैनल को क्लिक करिवे, टेलीग्राम चैनल जॉइन करिकि आपण टेलीग्राम चैनल ना होछि ओडिया एग्जाम गुरु एकेडमी। ठीक अछि, आपण टेलीग्राम चैनल को जॉइन करन। टेलीग्राम चैनल आपण मानकु वीडियो रो जो जहां भी पीडीएफ रे आपण सेठी पाई जिवे एंड तापर से हिसाब रे तापर आपण क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवे। तो चलतु वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करिया। तो प्रथम क्वेश्चन हम पाखरे अछि जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ साइंस। साइंस रे जो नेचर को कोनटा बेस्ट डिस्क्राइब करूछि। ऑप्शन अछि आपण हम पाखरे साइंस प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट अनचेंजिंग ट्रुथ अबाउट द यूनिवर्स। साइंस इज ए फिक्स्ड बॉडी of knowledge derived solely from authority। थर्ड ऑप्शन अच्छी आम पाखे साइंस इज बोथ ए प्रोसेस एंड ए प्रोडक्ट। साइंस इज बोथ ए प्रोसेस एंड ए प्रोडक्ट। फोर्थ अच्छी साइंस इज ओनली कंसर्न्ड विथ द नेचुरल वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग ह्यूमन मेड। अच्छा, नेचुरल वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग ह्यूमन मेड। साइंस टा नेचुरल वर्ल्ड अच्छी बट ह्यूमन मेड को ह्यूमन को एक्सक्लूड कराई। तो यहाँ केवे ठीक हम कि यहाँ ठीक हेनी। साइंस इज बोथ प्रोसेस एंड ए प्रोडक्ट। साइंस टा गोटे प्रोसेस रे पार्ट नहीं एंड जी प्रोडक्ट भी बाहर करुच्ची। तो यहाँ हम आंसर साइंस इज ए फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एटा तो नुहे। साइंस प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट अनचेंजिंग ट्रूथ अबाउट द अनचेंजिंग ट्रूथ अबाउट एटा तो एटा भी नुहे बिकॉज साइंस इज चेंजेबल। ठीक अच्छे। तो ऑप्शन कौन है? ऑप्शन हम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए की एम ऑफ टीचिंग साइंस एट द अपर प्राइमरी स्टेज इज टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड दिस अलाइन विथ। अच्छा, अपर प्राइमरी रे पिला मानक भितर क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी को डेवलप करने पाई ए सब जिनस साइंस रो को नेचर सहित अलाइन करुच्ची, को नेचर सहित से साथ दउची। द नीड टू मास्टर complex science definition, master complex science definition, the development of aesthetic sense toward the nature, the encouragement of critical thinking and questioning। critical thinking science रो गोटे बहुत बड़ो नेचर। तो यहाँ हम आंसर the preparation for immediate vocational career एटा तो नुहे। थर्ड क्वेश्चन which statement highlights the provisional characteristics of scientific knowledge। scientific knowledge को highlight करिया पाई कौनटा तार कैरेक्टरिस्टिक्स का साइंटिफिक नॉलेज कैरेक्टरिस्टिक्स कौनटा। साइंटिफिक फैक्ट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अक्रॉस ऑल द कंट्री एटा भी ठीक ही पारिबो। साइंटिफिक लॉज आर सब्जेक्ट टू चेंज ऑफ रिफाइनमेंट बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस एटा भी ठीक ही पारिबो। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन रेयर रिले हेविली ऑन एडवांस टूल एंड इंस्ट्रूमेंट, हेविली ऑन एडवांस टूल एंड इंस्ट्रूमेंट। साइंस शुड बी टॉट इन सिस्टमैटिक लिनियर फैशन। देखो सब गुड़ा ऑप्शन आम पाखे ठीक आसपर बट क्वेश्चन हिसाब से आमको कौन ठीक जाने व्हिच स्टेटमेंट हाइलाइट द प्रोविजनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज रो प्रोविजनल कैरेक्टरिस्टिक्स तो कौनटा हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अक्रॉस द कंट्री एटा प्रोविजनल साइंटिफिक नॉलेज हिसाब से देखा जाऊँगी। एटा कौन साइंटिफिक लॉ विषय कहब, इन्वेंशन डिस्कवरी विषय कहब। तो कौनटा हम ऑप्शन हम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन the objective to develop basic process skill of science। अच्छा, to develop basic process skill of science observing, classifying, measuring, inferring belongs primarily to which domain of learning। अच्छा, क्वेश्चन टा अच्छी कौन आउथरे जानिबा the objective to develop basic process, the objective to develop the basic process skill of science। basic process skill कौन? observing, classifying, measuring, inferring belongs to primary of which domain of learning। एटा कौन लर्निंग रो कौन डोमेन को एटा इंटरफेयर करुछि? कौन डोमेन हो? इफेक्टिव डोमेन ना कॉग्निटिव डोमेन ना साइकोमोटर डोमेन ना सोशल डोमेन। अच्छा, जेते बेले आमको क्वेश्चन आसीबो बेसिक प्रोसेस,
बेसिक प्रोसेस ऑफ साइंस एंड ऑब्जर्विंग क्लासिफाइंग मेजरिंग इनफरिंग ये सब जिन जो आसो यहाँ कौन हम आंसर एटा हे साइकोमोटर बिकज किसी गोटे जिन कम लगुचे आम देखुचे मापुचे हाथ अंग प्रकोचे से सब जिन चलुचे तो आंसर हम कौन सी नेक्स्ट क्वेश्चन ए मेजर एम of science education at the upper primary stage as per NCF 2005 is to develop scientific temper which activity contributes most to this major aim of science education में major aim कौनटा जोटा upper primary stage रहुची NCF 2005 national curriculum framework 2005 to develop scientific temper which activity contribute most of the कौनटा को वैसे temper कर जा ऑप्शन अच्छी कौन ना encouraging student to accept all the scientific information promoting rationality objectivity critical thinking over the superstition एटा हम आंसर बिकज साइंस जिनस अपर प्राइमरी कथा आने क्रिटिकल थिंकिंग आसो से भर कौन ऑब्जेक्टिव यहाँ हम ऑप्शन गोटा नेक्स्ट देखीना जस्ट फोकसिंग ऑन द मेमोराइजेशन तो नुहे मेमोराइजेशन हेनी लेक्चर मेथड हेनी तो आंसर हम कौन आंसर हम बी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय में कौन रिलेशनटा ट्रू हो पार टेक्नोलॉजी एंटायरली सेपरेट फ्रॉम साइंटिफिक एंटायरली सेपरेट हेनी साइंस इज द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी द प्रोसेस यहाँ गोटे हो पार ठीक अच्छे बट व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू साइंस टा प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी प्रोसेस साइंस टा प्रोसेस हो पार टेक्नोलॉजी टा तार प्रोडक्ट हो पार यहाँ भी हो पार ना साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफन प्रोवाइड द फाउंडेशन एटा फाउंडेशन एंड नॉलेज बेस्ड फॉर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्व यहाँ हम आंसर ऑल टेक्नोलॉजी मस्ट बी सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिशियल एटा नुहे तो आंसर कौन हम आंसर हम सी नेक्स्ट क्वेश्चन द साइंस करिकुलम शुड बी डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम द टेक्स्ट बुक द साइंस करिकुलम should be designed on the principle of moving away from the textbook रो moving away करिया पाई जो साइंस करिकुलम को ये कर जाउची कोन केमिति डिजाइन कराउची सेडा का को इंप्लाइज करची कांसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड ओनली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म स्टूडेंट शुड बी टॉट ओनली थ्रू फॉर्मल लेक्चर लर्निंग शुड बी लिंक टू इमीडिएट एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस एटा हम आंसर बिकज इमीडिएट एनवायरनमेंट सहित जो पिलामान सहित लिंक हम पिलामान से जिनस को बेसी रिलेट कर पारे ना कोनटा करूछंदी कोनटा नाही तो आंसर कौन हम आंसर हम बी नेक्स्ट क्वेश्चन बिकज फास्ट तो हेनी टेक्स्ट बुक शुड बी नॉट बी यूज एट ऑल शुड नॉट बी एट ऑल द टाइम तो नुहे ना अच्छा एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस रिलेटेड टू द इफेक्टिव डोमेन को डेवलप करने रिलेट करके कौन ऑब्जेक्टिव साइंस रो आम आग को नहीं आसवा कौन यूज करा जाए टू अंडरस्टैंड द मेकानिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन इफेक्टिव डोमेन से साइकोमोटर साउंड प्रोडक्शन एटा नुहे टू डिजाइन ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट एटा भी हेनी टू एप्रिशिएट द एस्थेटिक ब्यूटी एंड ऑर्डर ऑफ द इफेक्टिव डोमेन एटा हो बिकज इफेक्टिव माने कौन जोटा सेंसरी सेंस जिनस को नहीं आसी तो एटा कौन एस्थेटिक ब्यूटी एटा ऑप्शन हम सी देखो एटा आंसर लेखा भी अच्छे एठी रकटर अच्छा इन द ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ टीचिंग साइंस द रोल ऑफ द टीचर इज प्राइमरी टू ऑब्जर्वेशन मेथड जो टीचिंग साइंस टीचिंग रे ऑब्जर्वेशन मेथड एथिरे टीचर को रोल कोनटा रहउची प्रोवाइड ऑल द फैक्ट एंड डाटा टू स्टूडेंट प्रेजेंट ए क्लियर कंसल्टेशन एट द स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी डिजाइन द एक्टिविटी प्रोवाइड नेसेसरी मटेरियल्स एंड गाइड स्टूडेंट फोकस कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट व्हाइल स्टूडेंट पैसिवली वॉच तो टीचर प्राइमरी भूमिका कोनटा रहउची कोनटा हम ऑल द फैक्ट तो पिला मानन को देबे बट ऑब्जर्वेशन मेथड मेन कौच कौन डिजाइन द एक्टिविटी प्रोवाइड नेसेसरी मटेरियल्स एंड गाइड यहाँ हूँ ऑब्जर्वेशन मेथड रही ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग कौन प्रिंसिपल कौन मेथड को सी फॉलो कर लेक्चर मेथड एक्सपेरिमेंटेशन मेथड डिस्कवरी मेथड एंड डिस्कशन मेथड लर्निंग बाय डूइंग है डिस्कवरी मेथड बिकज पिला करेंगे निजे जो पिला डिस्कवरी कले सीना से किसी डू कले से डिस्कवरी करेंगे तो कौन टा हम आंसर डिस्कवरी मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्कवरी मेथड इन साइंस टीचिंग इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ डिस्कवरी मेथड इन साइंस टीचिंग इज बेस्ड ऑन कौन कार डिस्कवरी मेथड किए बाहर करते डिस्कवरी मेथड करते मन रखा ब्रूनर किए करते ब्रूनर नेक्स्ट क्वेश्चन द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड इज टिपिकल एटा जस्ट हमको गोटे मन रखते कौन सीक्वेंस से जिनस होची तो से कौन सीक्वेंस रोची एटा मन रखियार अछि फास्ट होची हमर सिचुएशन प्रोवाइड हो किछि गोटे सिचुएशन क्रिएट हो फास्ट सिचुएशन तापर हमर हो कोन
ना जदि सिचुएशन जो प्रोवाइड हमको जो सिचुएशन हमको प्रोवाइड कराई तापर राइट एरो सिलेक्शन जोटा आम राइट एरो सिलेक्शन प्रोजेक्ट मेथड कौन राइट एरो सिलेक्शन तापर हूँ राइट एरो प्लानिंग तापर हूँ राइट एरो एग्जीक्यूशन तापर हूँ राइट एरो इभालुएशन तापर हूँ राइट एरो रेकॉर्डिंग तो हिसाब से सिचुएशन ट्रू हिसाब से हमें फास्ट ये आस ऑप्शन बी हम आंसर एटा जस्ट टिके मन रखिए ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पाई नुहे आप आग को ओएसटीटी भी फॉर्म फिलअप बाहर हाँ मो कह कथा गोटे मुझे जन रखुची ओएसटीटी फॉर्म फिलअप बाहर साइड बहुत स्लो होची तो से जिनस आप जिते जल्दी पारे ओएसटीटी फॉर्म फिलअप करूँ ओडिशा सीजीएल फॉर्म आसी जो 19 डिसेम्बर पाखु फॉर्म फिलअप करेंगे एंड ओडिशा सीजीएल आपण मानकर ये जो ओटीटी सरला ओटीटी सरला रेगुलर आपण मानकर ओएसटीटी ओडिशा सीजीएल रो क्लास जोटा हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस रिवीजन क्लास सब हम तो आपण मानक रिक्वेस्ट करुच्ची आपण चैनल को सब शेयर करूँ सांग मान सहित शेयर करूँ एंड सब्सक्राइब करूँ जमीक कि आगक बहुत जिन आपण मान प्रॉपर प्लानिंग होती अच्छी तो से जिन आप सुविधा ने ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड प्राइमरीली एम्स टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड प्राइमरीली एम्स टू डेवलप कौन डेवलप माने एम करुच्ची टू द एबिलिटी टू मेमोराइज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर्स rote learning of formula and fact the capacity of for logical reasoning analysis and systematic thinking the ability to strictly follow instruction कौन टा problem solving method primarily aims to the capacity problem solving कौन टा capacity for logical reasoning because पिलार problem solving माने reasoning ऊपर ही reasoning skill ऊपर जीवा ना तो logical reasoning ही आसीबो ठीक है जेडा इजी क्वेश्चन अछि the integrated approach in science teaching in the upper primary stage means अपर प्राइमरी स्टेज रे इंटीग्रेटेड अप्रोच जो कराऊँगी तार मीनिंग कौन रोचे टीचिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेपरेटली एज डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट इंटीग्रेटिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट विथ मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज आर्ट्स ओनली ट्रीटिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एज ए यूनिफाइड होल राउंड कॉमन देम एटा हम आंसर कौन टा एटा हम आंसर टीचिंग साइंस थ्रो ओनली थ्योरी एंड एब्स्ट्रैक्ट एटा हम आंसर कौन हम आंसर हो सी नेक्स्ट क्वेश्चन The constructivist approach in the science learning emphasize constructivist approach कह जाए क्या माने गोटे सजेकी गोटे जगार सब जिनस को एप्रोच कर सब जिन गोटे प्रकार गोटे सिस्टमेटिकल जिन कंस्ट्रक्टिव एप्रोच कह जाए ठीक है मुझे आपको पेडागोजी पढ़ेबी ना सब्जेक्ट पेडागोजी जो पढ़ेबी ए कंस्ट्रक्टिविस्ट डिस्ट्रक्टिविस्ट रॉड मेमोराइजेशन सब जिन कवर करी एवं जस्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस होती तो सर्ट आप जानतु यहाँ माने तो कंस्ट्रक्टिव कौन टा आंसर द टीचर इज द सोल सोर्स ऑफ नॉलेज एटा हम स्टूडेंट भी पार नॉलेज इज पैसिवली रिसीव नॉलेज इज एक्टिवली कैन बी रिसीव तो यहाँ हेनी कौन टा आंसर आंसर लर्नर एक्टिविटी बिल्ड न्यू नॉलेज बस ये लर्नर एक्टिविटी बिल्ड न्यू नॉलेज एक्जिस्टिंग एरिया एंड एक्सपीरियंसेस यहाँ हम ए साइंस टीचर यूज ए कॉन्सेप्ट मैप टू एसेस द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट ए साइंस टीचर यूजेस ए कॉन्सेप्ट मैप टू एसेस द अंडरस्टैंडिंग लाइट को बुझे विषय जानापी कॉन्सेप्ट मैप जो साइंस टीचर यूज कले दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बिहेवियरिज्म कंस्ट्रक्टिविज्म डायडेक्टिक ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर द डिस्कवरी मेथड रिक्वायर्स द टीचर टू द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर द डिस्कवरी मेथड रिक्वायर्स द टीचर टू कौन डिस्कवरी मेथड पाई प्रोवाइड ए डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएट ओपन एंडेड लर्निंग ये ओपन एंडेड डिस्कवरी मेथड मान ओपन एंडेड लर्निंग ना तो हो पारे ओनली लेक्चर हेनी फोकस ओनली ऑन वेरीफाई नॉलेज एटा हेनी आंसर कौन आंसर हम बी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू कॉम्प्लेक्स लॉ और प्रिंसिपल दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू टेस्ट इट इन ए लैबोरेटरी जिनस आसी माने कोनटा जो एक्सपेरिमेंटेशन आ किसी दरकार नहीं सब किसी जाने दरकार नहीं एक्सपेरिमेंटेशन आसी नेक्स्ट क्वेश्चन when designing a simple motor using readily available material students are primarily using which method when designing a simple motor
मोटर को जिते डिजाइन कर यूजिंग रेडिली अवेलेबल मटेरियल स्टूडेंट प्राइमरी यूजिंग व्हिच मेथड कौन मेथड को प्री एक्जिस्टिंग जिनस अच्छी पिला माने अवेलेबल अच्छी बनाउछंती एटा डिस्कशन ना ऑब्जर्वेशन ना प्रोजेक्ट ना लेक्चर कोनटा हबो एटा प्रोजेक्ट पिला जे प्रोजेक्ट करछंती ना लेक्चर तो होबे ना ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन भी होबनी प्रोजेक्ट करछन निजे करछंती बाय डूइंग तो हबो लेक्चर मेथड सॉरी प्रोजेक्ट मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर द गुड साइंस टेस्ट टू एंश्योर दैट इट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट सेम रिजल्ट कंटिन्यूअसली जते थ्योरी पढ़ी वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रैक्टिबिलिटी ये सब थ्योरी रे आमे कवर करबा असेसमेंट चैप्टर रे जानिबा ता पूर्व जस्ट एथि कोन सेम रिजल्ट पाई हमको रिलायबल जिंस जे रहू एडा आंसर रिलायबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन ए साइंस टेस्ट इज कंसीडरिंग वैलिड जदी होची केते बेले इट इजी टू एडमिनिस्टर एंड स्कोर मेजर व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर example a test on matter actually assess knowledge of matter has a high average score for the class is composed entirely of multiple choice question eta to hoboni konta answer hobo b because valid kon kotha koya pai जोटा कुहाउची जोटा क्लास रे पढ़ा होची तार एग्जांपल देख पढ़ा होची मन करो तमान को फूल विषय रे सार पढ़ेबे दे तमान को गछ आनी देखेबे कि फायदा हबनी ना फूल विषय माने गोटे आमे फूल आनी की देले पिला बुझी पारिबो ठीक अछि तो आंसर हबो बी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए चेकलिस्ट एज टूल फॉर असेसिंग लर्निंग इन ए साइंस लैब रे प्राइमरी फंक्शन कोन रहउची चेकलिस्ट रो टू असाइन फाइनल ग्रेड ए बी सी record the frequency of specific student errors to indicate the presence of or absence of specific procedural skill or behavior जेमति कि where safety google setup एटा आंसर बिकॉज़ प्राइमरी फंक्शन कोन चेकलिस्ट रे पिला कोन सेटा करूची करूनी से सब जिंस जानिया था तो आंसर हो कोनटा आंसर हो सी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन सी लिखि दो जोन लेखाइन अपन लिखि देबे प्लस ए साइंस रो मु चेष्टा करूची क्वेश्चन सब आंसर भी मु टेलीग्राम चैनल अपलोड कर देबी ठीक अछि टेलीग्राम रे अपलोड कर दे सेटा अपन चेक करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन टू असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टूल और टेक्निक वुड बी टू असेस स्टूडेंट्स रे एबिलिटी जानिया पई स्टूडेंट्स एबिलिटी टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टूल्स तो स्टूडेंट एबिलिटी एसे टाइप टेस्ट रो किछि हेई पारिन मल्टीपल चॉइस रे पारिन प्रैक्टिकल एक्टिविटी पिला कोन केते करि पारु केते सिखिछि जते निजे जते करिवो लर्निंग बाय डूइंग जते निजे करिवो से जिंस तार एबिलिटी जणा पड़िबो ना तो जनकर एबिलिटी से जते करूछि से ओरल टेस्ट तो होबनी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर यार कोन आंसर होबो सी व्हिच असेसमेंट टेक्निक इज मोस्ट यूजफुल फॉर इवैल्यूएटिंग ए स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड वैल्यू स्टूडेंट रो एटीट्यूड एंड वैल्यू को जानिबा पई कोन प्रकार असेसमेंट करा जाय राइट इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ना प्रोजेक्ट वर्क ऑन कन्वर्सेशन और एन एनकॉडटल रिकॉर्ड और बिहेवियर ओरल क्वेश्चनिंग होबनी मैचिंग द नेम्स ऑफ पोल्यूटेंट एंड देयर सॉल्यूशन एटा हे परियो बट मेनली एटा हो बिकॉज़ व्हिच असेसमेंट टेक्निक इज मोस्ट यूजफुल कथा कहजी ना तो आंसर हो बी स्टूडेंट मान को एटीट्यूड वैल्यू जाने पई तो सेटा हो बी ठीक अछि Next question, a portfolio assessment in science is valuable because it provides evidence of portfolio assessment. Portfolio assessment को जानिया पाई पिला मानन को पाखरे कोन प्रकार एविडेंस को हमें यूज करि परिबा. Only the students high score on final test, the student learning progress, efforts, क्रिएटिविटी हाई स्कोर तो कॉपी करी पिला रखि पारे होय परबनी टीचर्स इफेक्टिवनेस जानि आमे कोन करे ओवरऑल फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ रनिंग द साइंस लैब एटा ही पारिबो बट मोस्ट प्रोबेबल कोनटा पोर्टफोलियो असेसमेंट पई एटा ऑप्शन बी जोटा आमे कहे द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस एफर्ट्स क्रिएटिविटी बिलो होल ईयर रो पिला कोन करी चाली छि से जिंस रो प्रोसेस आमे जाने पई पोर्टफोलियो रे लिखिबा तो आंसर हो कोन आंसर हो बी नेक्स्ट क्वेश्चन द purpose of using diagnostic test in science education is primarily to अच्छा diagnostic test रो purpose कोन पर प्राइमरी एजुकेशन रे प्राइमरी स्टेज रे पिला मानन को साइंस पढेला बेले diagnostic test रो purpose कोन होबो determine the students final grade identifying the specific nature cause location students misconception एटा आंसर compare the performance of all students in the class comparison बहुत खराब जिंसो assess the effectiveness of the teaching method एटा ही परियो
बट मोस्टली आंसर हम बी बिकज पर्पज डायग्नोस्टिक टेस्ट कथा कहजे ना पिला नेचर केमती कौन कर मिसकनसेप्शन कौन रही जाऊँगी डायग्नोस्टिक कले सीना तार भूल जोटा भूल ठीक से विचार करा पारे तो ऑप्शन हम बी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन if a student is consistently unable to draw a circuit diagram correctly circuit diagram जदि correctly करि पारो नै the teacher should be use a rating scale to assess the student's ability because it only checks if the student can name the symbol it allows the teacher to objectivity judge the quality and completeness of the drawing based on the predefined criteria it is the easiest assessment tools it can only be used for effective domain check the student can name symbol answer of B ठीक अच्छे क्वेश्चन पढ़ले आंसर जना पड़ तो कौन हम आंसर हम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल यूज फॉर इवैल्यूएशन इन साइंस साइंस टूल साइंस को इवैल्यूएशन कौनटा हो पारे एज अपोज टू टेक्निक टेक्निक कौनटा हो पारे ऑब्जर्वेशन ओरल क्वेश्चनिंग एनकोडेड रिकॉर्ड एंड प्रोजेक्ट अच्छा टूल यूज फॉर इवैल्यूएशन साइंस इवैल्यूएशन कौन टूलटा यूज कर ऑब्जर्वेशन तो नुहे साइंस ऑब्जर्वेशन ओरल क्वेश्चनिंग साइंस नुहे प्रोजेक्ट हो पारे बट एनकोडेड रिकॉर्ड रे ही सब जिन रेकर्ड रही पार पिलामानकर टेक्निक से कौन यूज कर ठीक से करें से जाने ऑप्शन हम कौनटा सी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए राइटिंग साइंस टेस्ट एसे टाइप क्वेश्चन आर बेस्ट फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू राइटिंग साइंस टेस्ट रे एसे टाइप क्वेश्चन आर बेस्ट फॉर स्टूडेंट कौन एबिलिटी को असेसमेंट करा जाय पारे राइटिंग रे रिकॉल आइसोलेटेड फैक्ट को पिलामाननको रिकॉल करने हेल्प करिवार अछि और सिंथेसाइज नॉलेज एक्सप्लेन रिलेशन एक्सप्लेनेशन आसुची कम्युनिकेशन साइंटिफिक आइडिया लॉजिकली एटा हम आंसर बिकॉज रिकॉल तो होबनी मन पकाय गेस द करेक्ट आंसर गेस तो नुहे लॉन्ग टाइम ऐसे टाइप क्वेश्चन ना परफॉर्म प्रैक्टिकल स्किल्स तो होबनी बिकॉज सेटा तो रिटन रे थोड़ी हो तो आंसर हम कौन आंसर हम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन ए टीचर notice that a student frequently completes assigned practical work well ahead of the class and shows deep curiosity the teacher should plan an remedial program enrichment program diagnostic test strict monitoring schedule कौनटा टीचर नोटिस द स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली कंप्लीट असाइनमेंट प्रैक्टिकल वर्क वेल एड ऑफ द अन्य मान तुलन पिला बहुत आगुआ करुछि तो ताकू रेमेडियल दरकार नहीं बिकॉज से पिला गिफ्टेड पिला ठीक अच्छे तो ताकू दरकार एनरिचमेंट डायग्नोस्टिक नुहे रेमेडियल डायग्नोस्टिक सेम टाइप ऑफ पिला यूज कर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी नुहे आंसर कौन हम बी ठीक अच्छे। एति 30टा क्वेश्चन साइंस एमसीक्यू ठीक अच्छे आशा करूँ आप प्रिपेरेसन बहुत भल चलती आउ 15-17 तारीख जो ओटीईटी अच्छी से आप समस्त ऑल द बेस्ट आशा करी समस्त बहुत भल करेंगे एंड 75 हूँ पासिंग मार्क तो आशा माने एमती भावेनि 75 मार्क पासिंग अच्छे 75 जिते पारे 90+ रखा चेष्टा करूँ 100+ रखा चेष्टा करूँ देले आप गोटे सेफ प्लेस रही पारे बिकज ए सबूर प्राक्टिस ए सबूर जिनस आप आगामी दिन जो जेटी एनबीएस केबी सब जिन हेल्पफुल रही ठीक अच्छे। पुणी थे यहाँ मैथ्र 30टा क्वेश्चन आसो एंड ईवीएस भी 30टा क्वेश्चन आसो ओटीटी ठीक पूर्व आसीज आपने से टेंशन नियंतुनी बट आप कंटिन्यूअसली रिविजन करूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। थैंक यू जय जगन्नाथ।